Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So after 4 months you're seeing me here on YouTube and with this makeup look, and I'm going to create this makeup look. ये बहुत ही अच्छा neutral brown smoky look है with zero effort. थोड़ा बहुत effort लगता है but this is a zero effort look. So I have created this look with minimal products and बहुत ही reasonable products से आप लोग high end brand का भी use कर सकते हैं, low end का भी use कर सकते हैं. This is up to you guys. So I was off 4 months due to many reasons. First is depression because मैं YouTube में इतना videos post करती थी. I'm having so many videos on YouTube and yes, I have completed 1 year on YouTube on 22nd of November. And I'm stuck with 230 subscribers on YouTube and I'm having 70 plus videos. If you are not believing me, you can go and check it out. Okay, so the second reason is due to some problem, and alright, so negativity aside, positivity here. So I'll try to post back-to-back videos. मैं try करूँगी post करने के लिए, and I'm thinking of doing food challenges as well as vlog. वो travel vlog भी हो सकता है या फिर normal vlog भी हो सकता है, but I'll make sure to make it interesting so that you people love to see it. So I don't want to make this intro इतना बड़ा सा and this video इतना बड़ा सा. So I'll stop my intro here. So let's get into the video, and before moving on to the video, do like this video, share this video with your friends and family so that I get motivated to make more and more videos for you guys. But मेरे YouTube videos इतने सारे हैं, subscribers इतने से, I know time लगता है grow करने के लिए, but according to my videos, according to my content, I feel bad, I feel hurt that you guys are not supporting me. I want your support. I hope you understand. So like this video, share this video to friends and family, subscribe to my chota sa YouTube channel and be my family member, my YouTube family member. And if you haven't watched my birthday vlog yet, my description box में उसका link दे दूँगी. And I'm sorry, I'm stammering a lot and I'm not able to interact with you people. I'm extremely sorry for that, but after 2 to 3 videos, I think I will be back on track. So yes, without any further ado and wasting time, let's jump into the video, and each and everything will be mentioned down in the description box below. So let's jump into the video. So first I will start off with my moisturizer, that is from the brand Urban Essence. So they have sent me this moisturizer, and if you want to know this review, you can go check it on my Instagram page. So ये बहुत ही अच्छा moisturizer है, and this is winter season. आपकी skin को hydration बहुत अच्छी तरीके से देता है. So little bit of moisturizer. So winters are already here, तो इसलिए हम लोगों को हमेशा अपने lips, अपनी skin को moisturize, hydrate करके रखना पड़ता है. So this is a good lip balm. You can go for this. मैं इसको अभी यूज़ कर रही हूँ. पहले मैं Blue Heaven का lip balm यूज़ करती हूँ. That is also a good lip balm. Next we'll move to our brows. I'm already done with my brows, and सब चीज़ का प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ रहेगा. सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. एंड उसके बाद हम लोग बेस करने वाले हैं. उसके बाद देखते हैं कैसा आई मेकअप किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर बेस मेकअप, मतलब माई बेस मेकअप. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल बी यूजिंग अ कलर करेक्टर बिकॉज ऑफ माई डार्क सर्कल्स. सो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ. दैट इज़ बाई L.A Girl or La Girl, whatever you pronounce. Next I will be using this green corrector from the same brand, and इसे मैं अपने acne spots पे यूज़ करने वाली हूँ. Next I will use this Maybelline Fit Me Concealer, and सबका shade and product description box में रहेगा. So go and check it out. Leftover concealer on the sponge. I'm using it all over my eyelids.
I will be mixing this two foundation. ये Coloressence का है and ये Maybelline Fit Me का foundation है. So मैं इस दोनों foundation को mix करूँगी. With the same beauty blender, I'm blending it out. Next, I will go with one more layer of concealer, and that is from the brand L.A Girl or L.A Girl. Next, I will be using this NYB contour stick, and I'm almost done with this. I need to get another one. Flat brush की हेल्प से मैं इस contour को blend कर दूँगी. Next, I will do थोड़ा सा baking. And I'll set all my concealer. Next, I will be doing my eyes, and for that I will be using this Maybelline का nude palette. And वहाँ से मैं ये shade लेने वाली हूँ. This is a beautiful brown shade, and मैं इसे अपने crease में अच्छे से blend करने वाली हूँ. Next, from the James Charles palette, मैं ये shade लेने वाली हूँ. This is also beautiful brown tone shade, and I will be blending it right below my crease. उसके बाद मैंने जो बेकिंग किया था उसको मैं रिमूव करने वाली हूँ. उसके बाद मैंने जो अपने अपर eyelids पे जो कलर मिक्स किया था, दैट ब्राउन एंड दैट ब्यूटीफुल ब्राउन टोन कलर, वो दो कलर में मिक्स करके अपने बॉटम लैश लाइन में उसको यूज़ करने वाली हूँ, राइट हियर. तो मैंने वो सेम दो कलर मिला के अपने नीचे लैश लाइन में उसको यूज़ किया था. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस ब्यूटीफुल ब्राउन कलर का पेंसिल, आई पेंसिल, एंड मैं इसे जस्ट अपने यहाँ पे वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन एंड विल बी जस्ट अप्लाइंग इट. It doesn't have to be perfect, but okay. उसके बाद with a flatter brush, I'm just blending it out. Next, I will be using this Maybelline का Falsy Push-Up Drama Mascara. बहुत ही अच्छा mascara है, and guys please ignore. I don't know क्या हुआ, but I'm not able to speak. After a long time, I'm shooting a YouTube video. And if you haven't seen my birthday vlog का video, go and check it out. मैं उसका link description box में दे दूँगी. So please, I'm extremely sorry I'm not able to speak properly. But yes, I will be on track. 2-3 वीडियो के बाद most probably I will be doing बकर बकर as usual. So I'm using this mascara. Guys, if you want, you can go with false eyelashes, but मैं इसको बहुत ही सिंपल रखना चाहती थी, सो मैंने सिर्फ मस्कारा लगाया है. एंड आई विल बी ब्राउजिंग माई फेस, एंड मैं ये दो शेड्स यूज़ कर रही हूँ फॉर ब्राउजिंग माई फेस. Nowadays I love bronzing. Alright, from the same palette I'm taking this highlighter shade, and I will be just highlighting my higher points of the face. I will be using loads of highlighter because ये nude eye look किया है मैंने. So highlighting your face will give a different look. Oh shit, मैं तो blush लगाना ही भूल गई. Sorry.
यही होता है बहुत दिनों बाद मेकअप करने का नतीजा। सो मैं दोबारा मिलानो का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। मैंने ब्लश सामने निकाल के रखा था बट आई एम अ भुलक्कड़ इंसान। ओके, switching on to same वाले brushes, highlighter. So for my inner corners, I will be picking this beautiful white shade which is having shimmer in it, and this is a new purchase, and this I got for my birthday and I gifted myself this. This is a Swiss Beauty HD textured eyeshadow palette, and this is in the number 03. So I'm using this shade. For my inner corners, from the same palette I will be taking this shade, and oh my god, it's so pigmented. मैंने बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया था. Next, for my lip color, I will be using this beautiful brown shade, and I will be mixing with this nude shade, like ombre kind of lip. These are my two current favorite shades, and मैं कहीं भी जाती हूँ ये दो शेड ही लगा के जाती हूँ. कोई भी वीडियो शूट करती हूँ, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट भी यही लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ. These two are my obsession currently. So this lip shade is lookingbomb.com with his eye makeup, and I have created a neutral brown smoky eye look. And yes, this is all about the video, and I will see you next time. And I know मैं आप लोगों के साथ अच्छे से interact नहीं कर पाई because I'm shooting a YouTube video after 4 months, and so this is a big problem for me to interact with you people. So I will see you next time. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इस वीडियो में. Do like, share, comment, subscribe to my channel and hit the bell icon. I'm active on my social medias like Instagram and Facebook, so you can go and check out my daily activities over there. And my daily activities ऐसे कुछ post नहीं करती हूँ, but yes I do post over there, मतलब 1-2 days के gap में. So you go and check it out over there. And मैंने वहाँ पे नवरात्रि सीरीज भी पोस्ट किया है. If you're not following me on Instagram, do follow over there. And this is all about the video. I'll see you next time. Till then, take care, stay safe, stay at home. I love you all. Bye.